રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીના કાંઝાવાલા રોડ અકસ્માતમાં દિલ્હી પોલીસે મોટો ખુલાસો કર્યો છે। તો દિલ્હી પોલીસના સૂત્રો પાસેથી જે મળેલી માહિતી અનુસાર જ્યારે પોલીસ આજે મૃતક પીડિત યુવતીનો રૂટ ટ્રેસ કરી રહી હતી ત્યારે તેમને જાણવા મળ્યું હતું કે પીડિતાની સાથે સ્કૂટી પર અન્ય પણ એક યુવતી હતી। હવે એક સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યું છે જેમાં બંને યુવતીઓ જોવા મળી રહી છે। આ ઘટનામાં પોસ્ટમોર્ટમ દરમિયાન જે દુષ્કર્મની પુષ્ટિ થઈ નથી ત્યારે આવો સમગ્ર ઘટનાક્રમ પર નજર કરીએ। दुर्घटना समये अंजलि एकली न हती। दिल्लीना कांझावाला रोड अकस्मातमां मोटो खुलासो। अकस्मात समये पीड़ित अंजलिनी साथे स्कूटी पर अन्य एक युवती पण हती। पीड़ित मृतक युवतीनो अकस्मात थयो त्यारे ते युवती पाछळ बेठी हती, जेना एक सीसीटीवी फूटेज सामे આવ્યા છે। तथ्य हमारे सामने आया है जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। होटल मैनेजरनो ચોંકાવનારો દાવો। જે હોટલમાં અંજલિ પાર્ટી કરવા ગઈ હતી તે હોટલના મેનેજરે કહ્યું કે અંજલિ અને તેની ફ્રેન્ડ પહેલેથી પાર્ટી માટે આવી ગયા હતા। ત્યારબાદ કોઈ વાતે તેમની વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો। ત્યારબાદ બંને છોકરીઓને હોટલની બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા। मैंने सिर्फ रूम दिया था, मैं अपनी ड्यूटी ऑफ करके चला गया था। अच्छा। उसके बाद जो डीवीआर में पुलिस वालों के पास है। अच्छा, लेकिन जो लड़की आई थी कहाँ रुकी थी एक बार जरा बताइए। रूम में रुकी थी 104 में। 104 में जी। अच्छा, पहले भी कभी आपने उनको देखा उस होटल में आई थी? हाँ जी देखा। अच्छा, लड़की के झगड़ा कर दी थी ऐसा कुछ सामने आया? नीचे झगड़ा हुआ उनका। नीचे झगड़ा हुआ है जी। किस बात को सुनने में पाया? हाँ जी? बात सुनने में आई वो क्या जी? कि किस बात पे झगड़ा हुआ, कुछ बात सुनने में आई हो? नहीं कुछ नहीं, एक दूसरे का आपस में लड़ रही थी। अच्छा, बीच में कोई एक लड़की उठ के चली भी गई थी ऐसा? हाँ जी। अच्छा, कौन गई थी? और जिसका अभी एक्सीडेंट में मिली है जो लड़की जो भी जिंदा है। एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, वही वही उठ के चली गई? हाँ जी वो चली गई, फिर वापस आई, फिर चले गए थे दोनों। कोई दो लड़कियां ही थी या उनके साथ कोई और भी आया था? मेरे सामने दो लड़कियां आई थी। कि वो आए थे, अपना चेक इन लिया 7 बजे के बाद ही आए थे वो। फिर वो लड़की थी, दोनों लड़कियां थी, वो उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी थी, आपसी में लड़ रहे थे वो। अब ये तो पता नहीं किस बात पे लड़ाई थी। हमने बोला भी था कि लड़ाई मत करो, अब आसपास के गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर वो 12 बजे के बाद अपना चले गए थे।
दोनों लड़कियां थी, उनके साथ कोई और भी लोग? और कोई नहीं था, बस वो दोनों? वही दो थे। दोनों ने ड्रिंक कर रखी थी? हाँ जी। किस बात की लड़ाई हुई? अब ये तो हमें भी नहीं पता किस बात पे, उनके आपसे पर्सनल मैटर था। आप लोगों ने उनको ड्रिंक करते हुए देखा? मतलब स्मेल आ रही थी उनके मुंह अच्छा, से। स्मेल आ रही थी। अच्छा, फिर झगड़ा कितने बजे शुरू हुआ? ये झगड़ा 9 बजे के बाद ही हुआ था शुरू। 9 बजे के बाद? हाँ, काफी टाइम तक इनका झगड़ा होता रहा, शांत होता रहा, फिर लड़ते रहे, शांत होता रहा, ऐसे चल रहा था उनका। ये भी आया था कि शायद बीच में कोई एक चली गई थी? हाँ, एक चली गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर वो आ गई थी वापसी, फिर उसके बाद वो चली गई थी। अच्छा, दोनों आपको चली याद कैसे है इतनी चीजें? मतलब आप पहले भी कभी वो आई हो या कभी यहाँ पे देखा? नहीं, पहले तो नहीं देखा हमने, इधर ही देखा था क्योंकि उन्हीं की लड़ाई हो रही थी ज्यादा और इसी चक्कर। अच्छा, અંજલિ સાથે પાર્ટીમાં અન્ય લોકો પણ હાજર હતા. અંજલિ સાથે હાજર તેની મિત્ર અને અન્ય લોકોની પૂછપરછ ચાલુ. હોટલ પાસે કેટલાક લોકોને કસ્ટડીમાં પણ લેવાયા હતા. ચાર નહીં 12 કિલોમીટર શબ ઢસડાયું. અંજલિના શબને કંજાવાલા સુધી 12 કિલોમીટર ઢસેડવામાં આવ્યું. અગાઉ દિલ્હી પોલીસે કહ્યું યુવતી 4 કિલોમીટર ઢસડાઈ. જે ગાડીથી એક્સિડન્ટ કરાયો તે ગાડી આરોપીની નહોતી. ગાડી કોઈ પરિચિત પાસેથી માંગવામાં આવી હતી. પાર્ટી કરી પરત ફરી રહ્યા હતા આરોપી. આરોપી દીપક ખન્ના અને અમિત ખન્નાએ મિત્ર આશુતોષ પાસેથી કાર લીધી હતી. કારમાં સવાર થઈ 5 આરોપી મુરથલ પાર્ટી કરવા ગયા હતા. મુરથલથી પરત ફરતી વખતે આ અકસ્માત થયો. એક્સિડન્ટ બાદ આરોપીઓએ કાર આશુતોષ પાસે મૂકી દીધી. આ સમયે તમામ આરોપીઓ નશાની હાલતમાં હતા. તે સમયે કાર સ્કૂટી સાથે અથડાઈ. બંને કાર છોડી ઘરે પરત ફર્યા. આ કાર આશુતોષના શાળાની હતી. આરોપીઓએ કર્યા મોટા ખુલાસા. કૃષ્ણા વિહારમાં કાર સ્કૂટી સાથે અથડાઈ. સ્કૂટી સવાર યુવતી પડી ગઈ. ત્યારબાદ આરોપીઓ ત્યાંથી ભાગી ગયા. આરોપીઓએ કંજાવલામાં ગાડી રોકી ત્યારે ખબર પડી કે તેમાં શવ ફંસાયેલ છે. ત્યારબાદ તેઓ ડરી ગયા અને શવને રસ્તા પર છોડી ભાગી ગયા. આશુતોષને ત્યાં ગાડી પરત કરી તમામ આરોપી ફરાર થયા. ગૃહ મંત્રાલય એક્શનમાં. ગૃહ મંત્રાલય આ કેસમાં રસ દાખવી રહ્યું છે. તમામ મુદ્દાઓનો રિપોર્ટ મંગાવવામાં આવ્યો છે. તપાસ કરાશે કે આ કેસમાં દિલ્હી પોલીસની બેદરકારી કેટલી.